Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibil Pro. I hope you guys will be fine and doing great. So today we are going to discuss different kind of a stuff in medical billing basic course. So in this lecture we are going to discuss all about the professional component, the technical component and the global component basically in medical billing. What is the professional component? What is the definition of professional component? How we are going to build different kind of a things in services regarding the professional component. Okay, and what is the difference between professional component and the global component and the technical component. Okay, so how we are going to bill and how we are going to receive the reimbursements for these different kind of components. Okay, so we will be just looking all that kind of a stuff in this lecture today. Okay, so let's start the lecture. So first of all, we are going to discuss all about the professional component. Okay, what is professional component? What is the definition of this one? And what are the different examples of this professional component as well? Okay, so let's see. What is professional component? Okay, so the professional component in medical billing and coding refers to the portion of a diagnostic test or procedure that involves the professional expertise and interpretation provided by a qualified healthcare provider. Okay, so you guys know that when a provider is going to interpret some kind of a report, some kind of a pathological tests and asking that and saying that you just need to perform these kind of tests. Okay, so it means the simple interpretation of a healthcare provider by reading different kind of a reports. So encompasses the different interpretations, okay, of the provider in the basically it encompasses in the professional component. Okay, so it encompasses the cognitive work performed by the provider in analyzing the results of the test or procedure and rendering a diagnostic interpretation or treatment recommendation based on their clinical judgment and expertise. बेसिकली देखा यही जाता है कि हाँ भी किसी भी प्रोवाइडर को मीन्स ये कि जब कोई रिपोर्ट्स दी जाती हैं, कोई टेस्ट दिए जाते हैं, तो फिर वो उसको डायग्नोस करता है, उसको देखता है कि हाँ भी पेशेंट को ये बीमारी है, ठीक है, और उसके अंदर ये देखा जाता है कि हाँ भी पेशेंट को मीन्स अपनी जो जो उसकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ हैं या जो उसका मेडिकल का एक्सपीरियंस होता है, सो उसकी बेस के ऊपर वो बताता है कि हाँ भी इसके साथ ये इसके ऊपर ये प्रोसीजर किया जाएगा या इसको ये टेस्ट मीन्स ये कि डिफरेंट और टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, इसकी ये कंडीशन है पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए, ठीक है, जो मतलब वो एनालाइज कर रहा होता है, जो इंटरप्रेट कर रहा होता है, वो जो अपनी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं बेसिकली, ठीक है, वो जब मेडिकल प्रोवाइडर मीन्स ये कि इस तरह की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बेसिकली ये चीज़ें अंडर फॉल करती हैं प्रोफेशनल कंपोनेंट में। मीन्स दैट इज सिंपली द प्रोफेशनल कंपोनेंट। मीन्स प्रोफेशनल क्या है, क्या कह सकते हैं कि हाँ भी जब भी कोई प्रोवाइडर किसी किस्म की प्रोफेशनल एक्सपर्टीज किसी भी सर्विसेज को मीन्स ये कि किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, बाय एनालाइजिंग द रिपोर्ट्स। ओके, so that is going to fall under the professional component. Okay, so the professional component is typically built separately from the technical component. Means what is technical component? We are just going to read out this kind of a thing in the next slide. Okay, so but before now, for now we are just going to focus on the professional component. हम पहले सबसे पहले professional component को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि professional component होता क्या है, ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि हाँ भी जब भी कोई मेडिकल प्रोवाइडर किसी भी रिपोर्ट्स को, किसी भी टेस्ट को डिफरेंट अपनी इंटरप्रिटेशंस को मीन्स ये कि उसको इंटरप्रेट करता है कि हाँ भी इसको ये चीज़ें हैं, इसको ये बीमारियां हैं, इसकी ये टेस्ट परफॉर्म करना एक मीन्स ये है कि वो अपना एक नॉलेज शेयर करता है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि हाँ भी इसके साथ ये प्लान्स, इसके ऊपर ये सर्जरीज की जानी चाहिए या ये टेस्ट परफॉर्म किए जाने चाहिए, या किसी भी किस्म की मीन्स ये है कि वो प्रोफेशनल मीन्स ये है कि एक एनालाइजेशन परफॉर्म करता है या इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, तो उसको हम प्रोफेशनल कंपोनेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। Okay, so next is the PC component is typically built separately from the technical component, which covers the resources and costs associated with performing the technical aspects of the test or procedure. Here is a more detailed explanation of the professional component. तो अब हम देखते हैं कि हम भी प्रोफेशनल कंपोनेंट के अंदर मजीद क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे होती है इसके अंदर प्रोफेशनल कंपोनेंट के अंदर। द प्रोफेशनल कंपोनेंट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर बाय अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मीन्स जब भी कोई क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी सर्विस या कोई टेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके अंदर फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अब उसको रीड आउट करने, जाहिर सी बात है, जब कोई रिपोर्ट आती है तो उसको कोई भी प्रोवाइडर जो होता है वो उसको पढ़ता है कि हाँ भी आया कि इस पेशेंट को ये डिजीज़ है, उसके जैसे नॉर्मल हम कोई टेस्ट वगैरह करते हैं, कोई लाइक ये है कि आप कह दें कोई एक्सरे परफॉर्म किया गया है, कोई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की गई है, एमआरआई किया गया है, तो उसको जाहिर सी बात है रीड आउट करना है, उसको एनालाइज करना होता है उस रिपोर्ट को। सो इस तरह किस्म की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इसको हम बेसिकली फॉल करते हैं प्रोफेशनल कंपोनेंट के अंदर। सो दिस इंक्लूड्स एनालाइजिंग द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट। मीन्स जो टेस्ट से हमें डाटा मीन्स ये है कि मिला है,
उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एबनॉर्मेलिटीज और फाइंडिंग्स, उसमें देखा जाता है कि हाँ भी कौन से लेवल्स जो हैं वो एबनॉर्मल से मीन्स ये कि एबनॉर्मल हो चुके हैं, शुगर लेवल कितना बढ़ चुका है या कम है, ब्लड मीन्स ये कि ब्लड प्रेशर हो गया। इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जो मीन्स ये कि रीड आउट की जाती हैं, इंटरप्रेट की जाती हैं, एनालाइज की जाती हैं, वो बेसिकली फॉल करती हैं प्रोफेशनल कंपोनेंट में। एंड प्रोवाइडिंग अ डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन और ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर क्लिनिकल एक्सपर्टीज। फिर उसके बाद वो जो मेडिकल प्रोवाइडर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ भी इसके ऊपर नेक्स्ट क्या प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है, ठीक है, इस चीज़ को नेक्स्ट हमने किस तरीके से लेके चलना है। सो दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल कंपोनेंट इज एनालाइज एंड डायग्नोस्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लिनिकल जजमेंट एंड एक्सपर्टीज। सो जो मेडिकल प्रोवाइडर है उसने अपनी क्लिनिकल जो जजमेंट देनी है, जो एक्सपर्टीज है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है प्रोफेशनल कंपोनेंट के अंदर, सो उसको हम देखते हैं। द पीसी कंपोनेंट रिलाइज ऑन द क्लिनिकल जजमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर in interpreting the results of the tests or procedures. It involves applying medical knowledge, experience, and judgment to accurately diagnose conditions, assess patients' healthcare status, and formulate अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान्स। ठीक है, वो जब उसकी रिपोर्ट्स देखता है, डिफरेंट टेस्ट को एनालाइज करता है, जब उसको एनालाइज करता है फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशंस देता है, उसके बाद अपनी जजमेंट देता है बेस्ड ऑन हिज और हर क्लिनिकल नॉलेज, उसकी जो मेडिकल नॉलेज होता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भी इस पेशेंट को हम नेक्स्ट इस तरीके से लेके चलेंगे कि हाँ भी डिफरेंट हमने ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं, इसके साथ इसको मीन्स ये है कि ये ट्रीटमेंट देना है या ये कोई सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करनी है। सो डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट मीन्स ये है कि जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको अपनी मीन्स ये है कि क्लिनिकल नॉलेज, एक्सपर्टीज, मेडिकल नॉलेज की बेस के ऊपर नेक्स्ट किस तरीके से लेके चलना है, सो दैट इज गोइंग टू बी फॉल अंडर प्रोफेशनल कंपोनेंट। ओके, so next is documentation of findings. Okay, so healthcare providers are responsible for documenting their findings and interpretations in the patient's medical record. Means ये है कि वो जाहिर सी बातें बताते हैं कि हमने ये चीज़ फाइंड की है, इस पेशेंट का मीन्स ये है कि ग्लूकोज लेवल इतना हाई है, कम है, ठीक है, इसकी मीन्स ये कि डिफरेंट जो भी फाइंडिंग्स होती हैं रिलेटेड, सो उसको ये है कि वो डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको नोट डाउन कर देते हैं उसकी रिपोर्ट्स के अंदर। दिस डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स एज अ क्रूशियल कंपोनेंट of the diagnostic process, providing a record of the provider's assessment and recommendations for patient care. ठीक है, तो पेशेंट की केयर के लिए जो वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ भी इस पेशेंट को के ऊपर ये टेस्ट किए जाने चाहिए या इस तरह की जो है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ भी उसको फिर ये है कि डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। वो सारी जो फाइंडिंग्स होती हैं उस मेडिकल प्रोवाइडर के, वो जो रिपोर्ट्स को पढ़ता है, उसके बाद इंटरप्रेट करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर बताता है कि हाँ भी इसके साथ इस पेशेंट को ये है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम इस तरीके से लेके चलेंगे। So that all kind of a data is going to be documented. Okay, next is billing and coding. The professional component is billed separately from the technical component in medical billing and coding. Yes, because professional component is different and technical component is different. Okay, so we are just going to see what is technical component in the next few slides. Okay, healthcare providers use specific current procedural terminologies, CPT codes, to report the professional interpretations and reporting services they provide. These codes indicate the complexity and nature of the interpretation performed by the provider. ओके, जिस किस्म की मीन्स ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, द प्रोवाइडर ने मीन्स किस किस्म क्या मीन्स ये कि टेस्ट को एनालाइज किया है, किस किस्म की असेसमेंट्स दी हैं और किस किस्म की फिर रिकमेंडेशंस दी हैं कि हाँ भी इस पेशेंट को ये बीमारी है, इसका फिर ये टेस्ट होना चाहिए, इसके फिर ये प्रोसीजर्स होने चाहिए, ये सर्जरी होनी चाहिए। सो इस तरह की जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं, जितनी भी वो एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड करता है, डाटा को एनालाइज करता है, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशंस देता है बेस्ड ऑन हिज और हर क्लिनिकल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज। सो दैट इज गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटेड। फिर उसके बाद ये है कि इसके लिए डिफरेंट सीपीटीज मीन्स ये कि इनकोड किया जाता है, ठीक है। वो नेक्स्ट मीन्स ये है कि एक फेज में आता है कि यहाँ पे मेडिकल कोडर्स होते हैं, वो फिर इन डायग्नोसिस को, इन रिकमेंडेशंस को डिफरेंट मीन्स ये कि कोड्स के अंदर कोड करते हैं, फिर ये क्लेम बनाए जाते हैं और इंश्योरेंस को सेंड किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि हाँ भी इसके अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं, मीन्स ये कि किन किन एग्जाम्पल्स के अंदर ये प्रोफेशनल जो कंपोनेंट है वो मीन्स ये कि ऐड किया जाता है। So professional component encompasses a wide range of diagnostic tests and procedures across various medical specialties. Okay, for example, radiological imaging studies, इमेज ये कि कोई भी रेडिएशन टाइप इमेज ये कि स्टडीज की गई हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, स्कैन, एक्सरे, एमआरआई स्कैन, मीन्स ये किसी भी सीटी स्कैन किया गया है, एमआरआई की रिपोर्ट्स आई हैं, एक्सरे कोई किया गया है, सिंपली द इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स
reports by radiologist constitutes the professional component। ठीक है, अब इनको जो मीन्स है कि स्टडी किया गया, अब इनके जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, एमआरआई की रिपोर्ट आई, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, या एक्सरे को मीन्स है कि किसी भी मेडिकल प्रोवाइडर ने, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट ने उसको मीन्स है कि रीड आउट किया, उसको एनालाइज किया कि हाँ भी पता है कि हाँ भी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मीन्स आपके लंग्स का क्या स्टेटस है। उसके बाद अगर कोई और चीज़ उसने अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज, मेडिकल क्लिनिकल नॉलेज जो उसका है, उसके बिहाफ उसने आपको कोई भी रिकमेंडेशंस दी हैं, उसने कोई भी चीज़ इंटरप्रेट की है, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी encompasses आर फॉल अंडर द प्रोफेशनल कंपोनेंट। Okay, so next is pathology services. Histopathology, cytopathology, the examination and interpretation of the tissue or fluid samples by pathologists are part of the professional component। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में, साइटोपैथोलॉजी में कोई भी एग्जामिनेशन की जाती है किसी भी फ्लूइड का या टिश्यू का, ओके, सो दैट इज गोइंग टू फॉल अंडर द प्रोफेशनल कंपोनेंट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, जब मीन्स ये है कि हार्ट की मीन्स ये है कि हार्ट बीट्स को मीन्स एनालाइज किया जाता है, ओके, फिर उसकी जब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को जो मीन्स है कि मेडिकल प्रोवाइडर एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है कि हाँ भी इसका हार्ट रेट किस तरीके से है, क्या सिचुएशन है, सो दैट इज गोइंग टू बी फॉल अंडर द professional component। The analysis and the interpretation of cardiac electrical activity by cardiologists or other qualified provider fall under the professional component। Okay, so ये 3-4 examples हैं जिससे ये है कि आपको professional component समझने के लिए काफ़ी मीन्स ईज हो जाएगा। Okay, so that was all about professional component। Okay, we have one point more, that is the reimbursement। Okay, so means reimbursement किस तरीके से हम receive करते हैं। Providers receive reimbursements for the professional component based on the complexity and level of interpretation involved in the service। Reimbursement rates may vary depending on the factors such as the type of service, payer policies and geographic location। मीन्स ये कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मीन्स ये कि डिफरेंट रेट्स होते हैं, डिफरेंट इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ भी डिफरेंट होती हैं, और जिस तरह की सर्विस परफॉर्म की गई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ भी आपके क्या रेट्स होते हैं। ओके, इन समरी द प्रोफेशनल कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स द कॉग्निटिव वर्क परफॉर्म्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन इंटरप्रेटिंग diagnostic tests or procedures and providing diagnostic interpretations or treatment recommendations based on their clinical expertise। It plays a critical role in patient care, diagnosis and treatment planning, and it is built separately from the technical component in medical billing and coding। Okay, so this was all about the professional component। I guess you guys have a clear view and clear idea now, like what is professional component, how we are going to discuss, and how the different providers are going to perform different services that fall under the professional component। Okay, means कि basically जो providers होते हैं उनकी जो professional, उनका जो medical experience होता है, कोई भी वो जब recommendation पास करते हैं after analyzing, after watching द पेशेंट्स रिपोर्ट्स, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स को देखकर, उसके जो टेस्ट आए हैं उसको देख के जो भी रिकमेंडेशन पास आउट करते हैं, सो इस तरह की कोई अगर सर्विस कोई प्रोवाइडर परफॉर्म करता है, दैट इज गोइंग टू फॉल अंडर द प्रोफेशनल कंपोनेंट। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मूव टू द टेक्निकल कंपोनेंट। टेक्निकल मीन्स ये है कि जाहिर सी बात है, जैसे इसके मीन्स के नेम से जाहिर है, कोई भी टेक्नीशियन मीन्स कोई भी टेक्निकल काम जो इसके अंदर किया जाता है, किसी किस्म की जो प्रोवाइडर है with technical means ये कि चीज करता है, that is going to fall under the technical component। Okay, so let's see what are different kind of things comes under the technical component। The technical component in medical billing and coding refers to the portion of a diagnostic test or procedure that involves the resources and cost associated with the performing the technical aspects of the services। So in that technical component we are just going to cover all that kind of things which comes under the technical component, like the things which were used to perform that kind of a service। मीन्स जो भी सर्विस को परफॉर्म करने के लिए कोई भी चीज़ मीन्स यूज़ की गई है, जिसके अंदर लाइक ये है कि यू कैन से दैट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी अगर इस तरह की चीज़ है, और कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ यूज़ की गई हैं, और उसके अलावा क्या कोई भी जो इक्विपमेंट्स हो गए, उसके अलावा कोई भी मीन्स कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो इसके अंदर फॉल करती हैं, जो भी उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, पर्सनल मीन्स के स्टाफ यूज होता है, सो दैट इज गोइंग टू फॉल अंडर द टेक्निकल कंपोनेंट। ओके, सो इट encompasses the infrastructure, equipment, facilities, personnel and supplies used to conduct the test or procedure, excluding the professional interpretation and reporting provided by a healthcare provider। ओके, सो इसके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ यूज़ की गई हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, पर्सनल मीन्स के स्टाफ यूज़ किया गया है, ठीक है, एंड सप्लाइज यूज टू कंडक्ट द टेस्ट और प्रोसीजर, मीन्स उस टेस्ट को या उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्सपर्टीज़, ठीक है, मीन्स यूज़ की गई हैं, जो सप्लाइज यूज़ की गई हैं, दैट कम्स और दैट फॉल अंडर द टेक्निकल कंपोनेंट। ओके, so the TC component is typically built separately from the professional component, of course, which covers the cognitive work performed by the provider in interpreting
the results and rendering our diagnostic interpretation or treatment recommendations. Here is a more detailed explanation of the technical component. Okay, so let's see what are the different kind of different aspects that we can just let you guys know about technical component. Okay, so resources and infrastructure. The first one, the technical component includes the resources and infrastructure required to perform a diagnostic test or procedure. This encompasses equipment, facilities, exam rooms, okay, imaging machines, laboratory infrastructure, laboratory instruments, and other technical resources used in conducting the service. Means कोई भी laboratory के अंदर कोई procedure perform किया, आपने कोई test कराया, ठीक है, like sugar level means ये किस तरीके से है, आपकी last 3 months की, तो उसको उसका different एक test होता है. So उसको test perform करने के लिए जो भी apparatuses use किए हैं, जो means ये कि स्टाफ यूज़ किया गया है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो भी मशीन्स यूज़ की गई हैं, सो इनकी जितनी भी कॉस्ट होती हैं या जो इनका मीन्स ये है कि यू कैन से दैट ये सारी जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इसको हम मीन्स ये है कि टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर फॉल करते हैं. ठीक है, उसके अंदर मीन्स ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं दैट फॉल अंडर द टेक्निकल कंपोनेंट. ओके, पर्सनल एंड स्टाफिंग. ठीक है, अब देखा जाता है कि हाँ भी इसके अंदर स्टाफ भी यूज़ होता है, मेडिकल प्रोवाइडर्स भी यूज़ होते हैं और नर्सेज भी यूज़ होती हैं. सो इनकी भी मीन्स ये है कि ये जो इनकी जो सर्विसेज होती हैं, ये भी काउंट किसके अंदर होती हैं, टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर. द टेक्निकल कंपोनेंट इन्वॉल्व्स द पर्सनल एंड staffing necessary to support the performance of the test or procedure. This includes technologists, technicians, nurses, and other support staff involved in assisting patients, operating equipment, and ensuring the safe and efficient conduct of the service. Okay, so once the provider is going to perform a procedure or test, the complete scenario, okay, the complete equipments, the supplies, the infrastructure, the machines, the laboratory equipments, or the personnel, okay, so any kind of things which are included in performing different kind of tests, okay, in an examination room or in a treatment room, so that counts or that fall under the technical component. Okay, so let's see what we have next over here. That's equipment and supplies. The technical component covers the cost of equipments, okay, and supplies used in performing the test or procedure. उनकी जितनी भी cost होती है, जो भी supplies use की गई हैं, ठीक है, means कोई भी means ये है कि supply use की गई है या कोई equipment है जो उसकी cost होती है, so उसकी cost को हम technical component के अंदर bill करते हैं. And so let's see, next is this includes the purchase, maintenance, and operation of medical devices, instruments, reagents, contrast agents, and other consumables required for conducting the service. इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, जितने भी मीन्स है कि apparatuses हो गए, जितनी machines हो गई, उनको मेंटेन करने के लिए जो मीन्स है कि कॉस्ट आती है, ठीक है, सो इस तरह की जितनी भी मीन्स है कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है उसको हम मीन्स है कि ऐड कर देते हैं इस टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर, और इसको प्रोफेशनल कंपोनेंट से डिफरेंट बिल किया जाता है. Facility fees. Facilities such as hospitals, clinics, imaging centers, and laboratories incur costs related to overhead, utilities, maintenance, and administration in providing the infrastructure for conducting diagnostic tests and procedures. These facilities fees are included in the technical component. Okay, means ये कि आप कोई भी facility जहाँ पर ये test perform किया गया है, so उसकी जो administration का means ये है कि cost आती है, जो infrastructure उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर ये test perform किया गया है, उसकी जो cost होती है, so इसके जो bills वगैरह होते हैं वो भी हम इन component टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर काउंट करते हैं. Okay, so next is technical support services. The TC component may involve technical support services such as scheduling appointments, patient registration, specimen processing, quality assurance, and compliance with regulatory requirements. These support services contribute to overall delivery of the diagnosis test. So इस तरह की जो मीन्स है कि सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, ये भी सारी जो चीज़ें हैं ये भी टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर ही फॉल करती हैं कि हाँ भी अपॉइंटमेंट किस तरीके से मीन्स है कि किसी ने अगर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल की है, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन करने के लिए मीन्स किसको बिठाया गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं, उन फॉर्म्स के मीन्स की जाहिर सी बात है जो स्टाफ यूज़ किया जा रहा है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और स्पेसिमेन प्रोसेसिंग, स्पेसिमेन को कैसे रिसीव किया गया है, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया गया है, किस तरीके से उसको स्टोर किया गया है, सो ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग्स आर included or conducted, you can say that fall under the technical component. Okay, next is billing and coding. The technical component is billed
built separately from the professional component in medical billing and coding. Healthcare facilities use specific CPTs, current procedural terminologies, codes to report the technical resources and costs associated with performing diagnostic tests and procedures. These codes indicate the type, complexity and setting of the services provided. ठीक है, सो मीन्स जब बिल करने लगते हैं, जब भी किसी इंश्योरेंस को हमने क्लेम सेंड करना होता है, सो उसमें देखा जाता है कि हाँ भी किस तरह की सर्विसेज परफॉर्म की गई थी, उसको डिफरेंट कोड्स के अंदर कोड किया जाता है, ठीक है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया गए हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ भी किस तरीके के टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, किस तरीके की जो सप्लाईज हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, मीन सारी जितनी भी चीज़ें आती हैं टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर, तो उनको देखा जाता है और उनको फिर इस तरीके से कोड किया जाता है कि हाँ भी जो इंश्योरेंस को जब हम क्लेम सेंड करते हैं वो उनको फिर पे करें। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी फॉल अंडर द बिलिंग एंड कोडिंग सेक्शन। सो नेक्स्ट वी सी व्हाट वी हैव ओवर हियर, दैट इज टेक्निकल कंपोनेंट एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज। अब देखते हैं कि अभी कि इसके अंदर क्या कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं। The technical component encompasses a wide range of diagnostic tests and procedures across various medical specialties. For example, radiological imaging studies, MRI, CT scan, X-ray. The acquisition of images means जिस तरीके से वो image जो है वो हमें मिली है, ठीक है, उसको करने के लिए and technical aspects of conducting the study fall under the technical component. means उसके लिए जो apparatuses यूज़ किए गए हैं, जो personal staff यूज़ किया गया है, जो nurses यूज़ की गई हैं, ठीक है, और जितने भी apparatuses, जितनी भी सप्लाई, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स, जितनी भी मशीनरी जो यूज़ की गई है, इसका जी कॉस्ट होती है, ये सारी कॉस्ट हम मेडिकल में जी है कि इसके अंदर टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर काउंट करते हैं। ओके, सो लेबोरेटरी टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टिश्यू एनालिसिस, the processing of specimens, operation of laboratory equipments and performance of the test by laboratory personnel constitutes the technical component. उस टेस्ट को मीन कि कोई ब्लड टेस्ट है, कोई शुगर टेस्ट है, कोई मीन कि टिश्यू टेस्ट है, सो इन सब को परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से स्पेसिमेन लिया गया, स्टोर किया गया, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया गया, लेबोरेटरी के अंदर कौन से एप्रेटिसेस यूज़ किए गए, कौन सी मशीनरी यूज़ की गई, सो इस तरह की जितनी भी मशीनरीज हैं उनकी मेंटेनेंस, उसके सप्लाईज, उनके लिए कौन कौन सी कंज्यूमेबल्स यूज़ किए गए, सो ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर द टेक्निकल कंपोनेंट। Cardiopulmonary function test, okay, pulmonary function for example, and pulmonary function test, echocardiography, the operation of equipment, administration of the test, and the technical support provided by healthcare personnel and part of the technical component. Okay, so इस तरह के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है, सो इसके अंदर भी जितनी भी चीज़ें मीन्स है कि काउंट की जाती हैं, ओके, जितनी भी मशीनरी यूज़ की गई, जितनी भी सप्लाईज यूज़ की गई, जो भी प्रोफेशनल स्टाफ यूज़ किया गया, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर द टेक्निकल कंपोनेंट. So all these kind of things are going to be considered under the component. Okay, technical component. The last one is the reimbursement. Providers receive reimbursement for the technical component based on the cost associated with the resources and infrastructure used in the performing the services. ठीक है, अब देखा जाता है कि हाँ भी कहाँ पर वो टेस्ट परफॉर्म किया गया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, कौन सी सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड की गई हैं, उसके लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, किस तरह के मीन के सेटिंग्स थी, किस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स से मशीनरी थी, सो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर कंसिडर्ड. Reimbursement rates may vary depending on the factors such as the type of services, paid policies, and the geographic location as well. In summary, the technical component represents the resources and costs involved in performing the technical aspects of a diagnostic test or procedure. It encompasses equipments, facilities, personal supplies, and support services necessary for conducting the services, and it is billed separately from the professional component in medical billing and coding. Okay, so that was all about the technical component. Now we are moving towards the global component. Okay, so what is the global component? How we are just going to differentiate global component from professional component and the technical component. I guess you guys have a clear view now about that professional component क्या होता है, ठीक है, and what is the technical component. और इसके अंदर कौन सी चीज़ें प्रोफेशनल में कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं, टेक्निकल में कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं, and what is the global component. Let me just let you know guys that technical component plus professional component is equal to global component. Okay, so let's elaborate this one. Okay, so in medical billing, a global component refers to a bundle payment structure used for certain medical services, particularly surgical procedures. This payment model combines various elements of a medical services into a single fee covering both the procedure itself and the related pre-operative, intraoperative and post-operative care. मीन्स ये है कि प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले कौन से प्रोसीजर्स किए गए, कौन सी मीन्स ये है कि सर्विस प्रोवाइड की गई एट द टाइम जब ये है कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी या कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें थी, और उसके बाद ठीक है पोस्ट ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज जो परफॉर्म की गई. सो ये सारी जो चीज़ें हैं कंडक्ट मीन्स इनको हम अल्टीमेटली एक सिंगल फी में चार्ज करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबल. ठीक है, मीन्स प्रोफेशनल कंपोनेंट को आप काउंट कर लें,
और टेक्निकल कंपोनेंट को काउंट कर लें, सो ये दोनों चीज़ें मीन जब काउंट मीन्स ये कलेक्टिवली जब बिल की जाती हैं, so they comes or they fall under the global component. Here's a detailed explanation about the global component. So the global component refers to the total package of care provided for a specific Medicare service or procedure, including both the professional and the technical component. Okay, so इसके अंदर professional और technical दोनों means ये है कि जब combine किए जाते हैं, so that becomes the global component. It encompasses all the aspects of the services from the initial evaluation and planning through a performance of the procedure, interpretation of results, and any necessary follow-up care. Global billing typically includes both the professional fees for the provider's services and the facility fees for the resources and infrastructure used. Technical component providing a comprehensive reimbursement for the entire services. Okay, so we are just going to count all the services, means ये कि start से जब patient की registration start हुई till the ये है कि उसके जो post operative जो tests से वो भी perform किए गए, so that all kind of services which were rendered during this session or this period, so all those kind of services are going to be included or concluded in that kind of a global component. Okay, so the professional components means all the tests or all the reports which were interpreted by a medical provider, and all the services or all the equipments, all the machinery that was used in the technical component. So collectively we are just going to sum up these two kind of a different services, professional component and the technical component, into a one component that is going to be a global one. Okay, so next is example. So what is the difference, like we can just consider like हम किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे global component के अंदर मीन्स कौन कौन सी services आती हैं जो कि professional component और technical component में मीन्स थी. Okay, so let's consider surgical procedure performed in a hospital. कोई एक surgical procedure perform किया गया है hospital के अंदर. The global component would include the professional fees of the surgeon services, okay, as well as the facility fees for operating room, equipment, nursing staff, and other resources used during the procedure. Technical component. Billing for the global package covers all aspects of the surgical care provided from pre-operative evaluation to post-operative follow-up. Okay, so all those kind of services which were rendered before operation, during operation, and after the operation, so all those kind of things are considered under the global package. Okay, so means simply we can just clearly say that the professional component and the technical component, when we combine these two, that becomes the global component. In summary, PCTC and global represent different components of a medical services or procedures, with PC referring to the professional interpretation and reporting, technical component referring to the technical resources and costs, and global encompassing both components as a comprehensive package of care. Understanding these components is essential for accurate coding and billing in healthcare industry or healthcare situations. Okay, so clearly we have a clear idea now what is professional component, जिसके अंदर पे जो मेडिकल प्रोवाइडर है उसने डिफरेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज किया, डिफरेंट टेस्ट को एनालाइज किया, उसने अपनी मेडिकल जो एक्सपर्टीज थी उसके थ्रू उसने बताया कि हाँ भी कि इस पेशेंट के ऊपर नेक्स्ट जो प्रोसीजर करना है या नेक्स्ट जो इसके टेस्ट वगैरह करने हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं. सो मीन्स ये कि थियोरेटिकल काइंड ऑफ नॉलेज जब वो शेयर करता है तो दैट इज गोइंग टू फॉलो अंडर द प्रोफेशनल कंपोनेंट. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हाँ भी जो नेक्स्ट टेस्ट किए गए हैं उसके टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बेसिकली जो भी सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए जो भी मीन्स इक्विपमेंट्स यूज़ हुए, डॉक्टर्स यूज़ हुए, प्रोफेशनल स्टाफ यूज़ हुआ, नर्सेज यूज़ हुई, और उसके अलावा क्या कहते हैं डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स यूज़ हुए, मशीनरीज यूज़ की गई, जो भी इन सब चीज़ों की कॉस्ट थी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे ये प्रोसीजर परफॉर्म किया गया, सो ऑल दोज काइंड ऑफ कॉस्ट आर कंक्लूडेड आर इंक्लूडेड इन टेक्निकल कंपोनेंट. फिर जब हम प्रोफेशनल सर्विसेज को और जो टेक्निकल सर्विसेज को PC एंड TC इज इक्वल टू G, ठीक है. सो इन दोनों को जब हम कंप्रिहेंसिवली एक ही यूनिट के अंदर बिल करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी concluded as global component. Okay, so that was all about the professional component, technical component, and the global component. Okay, so if you like this lecture, then you guys can subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for the next different aspects and different kind of a stuff which I'm going to share about medical billing basic course. Okay, so if you guys have any kind of a trouble, any kind of a question regarding the professional component, technical component, and the global component, then you guys can let me know. You guys can comment on this YouTube video as well, and you guys can inbox me on my WhatsApp number that is already given, and the Gmail ID as well, so you guys can let me know. So inshallah we'll meet in the next lecture with another good kind of information regarding the medical billing and coding. So till then, take care of yourself and of your family. Remember me in your kind prayers. Allah Hafiz.